You are with Rahul Sharma, your friend, guide or mentor. Whatever you want to say, you can. But here we're going to work it out the masterpiece of ishmat chughtai. जी हाँ, I'm talking about Lihaf. आप इसको quilt कहें या रज़ाई कहें, that's all up to you. It's a short story that was originally written in Urdu. जी हाँ, अगर आप बोलते हो सर it's a controversial short story. जी हाँ, controversial short story. ऐसा क्यों बोला गया? What was the reason behind it? जानना जरूरी है. दैट फ्रेंकली सेज दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट द अननेम्ड नरेटर. The unnamed narrator who must be around her 11th or 12th year of her life. जी हाँ, 11-12 साल की लड़की. She too have at that time the innocence. जी हाँ, innocence थी उसमें कहीं ना कहीं that she had lost in the process of this story. अब यहाँ पे हमने बोला सर द स्टोरी इज ऑल फ्रॉम द मेमोरी. जी हाँ, कहानी मेमोरी से आती है, बच्चे की यादों से आती है. बिकॉज व्हेन द विंटर अपीयर्स एंड शी वांट टू हैव और कवर हरसेल्फ विद द क्विल्ट, ऑल थिंग्स कम इन फ्रंट ऑफ हर. ये स्टोरी कॉन्ट्रोवर्शियल रही क्योंकि इसके कई सारे रीजन है. इसने फैमिलिज्म को शो किया. सर इस स्टोरी में हमें लेस्बियन रिलेशनशिप को शो किया गया. वी आर हैविंग द होमोसेक्सुअलिटी टू इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी. एंड वाई वी नीड टू रीड दिस स्टोरी. सर क्या जरूरत है ऐसी स्टोरी को पढ़ने की? इट्स द पार्ट ऑफ आर कोर्स. जी हाँ, कई यूनिवर्सिटीज में दिस अ पार्ट ऑफ एमए स्टूडेंट्स कोर्स और द इंग्लिश ऑनर्स such as Delhi University, whereas you're talking about SOL or a regular course, this is a compulsion to work out this story. आपने कहा सर क्या है स्टोरी में, कैसे डील करेंगे, कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं याद रखनी. तो आपको कुछ इंसिडेंट बताता हूं जिनको आप याद रखेंगे सो दैट यू कैन क्लियर द एंटायर स्टोरी. द लिहाफ, जिसको आप रजाई कहें या क्विल्ट कहें, इट्स ऑल अप टू यू गाइस. लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डिस्कशन ऑफ अ प्लेस. द प्लेस दैट इज नोन एज टू बी आगरा. जी हाँ, आगरा, हम सबने इसका नाम सुना है. एंड हियर व्हाइल टॉकिंग अबाउट आगरा विल गेट टू नो द ग्लिम्स ऑफ मेमोरी ऑफ द नरेटर. जी हाँ, मेमोरी ऑफ नरेटर, क्योंकि यहाँ पे जब छोटे बच्चे अपनी दुनिया बिजी होते ना, द नरेटर इज बिजी विद फाइटिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. जी हाँ, ब्रदर्स सिस्टर खेल रही है. एंड एट द मेन मोमेंट हर मदर हैव टू गो समवेयर. जी हाँ, उसकी मदर को कहीं जाना पड़ रहा है. बिगिनिंग थी उसकी मेमोरी की. Now her mother had to go somewhere, so she had really make her to stay at बीबी जान house. अरे बीबी जान कौन है? Who is his बीबी जान? She got married to नवाब. जी हाँ, बीबी जान कोई डिस्टेंट कजन है उसकी मदर की. किसकी? नरेटर की, जिसका नाम हमें नहीं दिया गया. तो वो बीबी के जान के घर जाके उसको छोड़ देती है, जिसकी शादी अभी हुई है किससे? नवाब से. नवाब एन ओल्ड एज गाय, ओल्ड एज गाय जिसको रिप ऑफ कहते हैं. हमने कहा एक ओल्ड एज गाय है जिससे उसकी शादी हुई किसकी? बीबी जान की. बट सॉरी टू से यू, दिस नवाब इज नॉट इंटरेस्टेड इन बेगम जान. ऐसा नहीं है दैट दिस नवाब रियली हैव नो इंटरेस्ट इन बेगम जान की वो प्रोस्टिट्यूशन सेंटर जाता हो. सॉरी बॉस, ही डोंट गो टू दैट प्लेसेस. तो प्लीज आप उसको अच्छा आदमी और कैरेक्टर वाइज कोई सर्टिफिकेट मत देना, बिकॉज इज नॉट इंटरेस्टेड इन वुमन, इज इंटरेस्टेड इन मैन. तो यहाँ पे स्टोरी कॉन्ट्रोवर्शियल यहाँ से शुरू होती है. बट ऑन अ सीरियस नोट, बेगम जान टू वांट दैट सेक्सुअल प्लेजर दैट एवरी वुमन नीड टू हैव फ्रॉम हर हस्बैंड. For that she had done lots of things to get the attention of her, but it was a complete failure. Then she get frustrated. Now there is an entry of a girl, not a girl, a lady, the maid of the house, रब्बू. यहाँ पे रब्बू की एंट्री स्टोरी में होती है और रब्बू एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इन द लाइफ ऑफ बेगम जान. That make her glow come back on her face. जी हाँ, the make her glow come back on her face. So what she had done with the Begum Jan shows that the glow again come on back face. So ऐसा क्या किया? We'll get to know all that. Don't worry about it. अब जब यहाँ पे हमारा नरेटर, जो हमारी नरेटर है जो अननेम्ड है, जिसका नाम नहीं बताया गया, थ्रू आउट द स्टोरी नहीं बताया गया, ठीक है, वो बेगम जान को देखते तो शी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड बेगम जान बिकॉज शी इज वेरी स्मार्ट, वेरी ब्यूटीफुल. I use the word smart. You'll get to know why you use the word smart instead of beautiful. Now, here we need to work it out. अब स्टोरी का सबसे बड़ा प्रोसीजर ये है कि जब भी बेगम जान को हमारी नरेटर देखती है, she was having a massage from रब्बू.
always having a massage. A long period of massage was going on. What the hell is in that massage? यार हो क्या रहा है? And the other thing that was really very important, at the time of the night when she was in sleep, really जब वो सोने लगती है तो उसको ऐसा लगता है that something was going on next to her, like a cat is trying to sweep up everything was in the plate exactly. Short of somebody is trying to really lick something. She was hearing that sound. कुछ थोड़ा mischievous है कि हो क्या, what the hell is going on? But there was nothing really inside her. In particular room, there was Begum Jan really sleeping next to her, and she was having a complete quilt over her. And then things goes on and on and on. And then there was a turn. There was a turn in the story. Now here, Rabbu have to move out to her house as her son is not well, and she have to move out. For that days, generally a short period of time, but for that days, Begum Jan really just become feeling sick, and she was unhappy. Really, she was completely unhappy. She don't want to eat anything. She don't want to drink anything. And on that moment, generally on that moment, narrator को ऐसा लगता है कि शायद उसको मसाज चाहिए. तो narrator, the girl, offered the Begum Jan the massage, and she was doing this just to help really Begum Jan, because she was used to have the massage every day for a long period of times. But what happened actually when she just start giving massage to Begum Jan, she was really goes on sensual. She allow her to touch every part of her body during that massage, and that is something mischievous for a girl, a small girl. She don't really want to do all that. And then afterwards, now she really slept with the narrator and squeeze her as anything, generally squeeze her as anything, as you are squeezing the mud. And that was a horrible stuff for a girl who was just passing from her teens, the beginning teens. And it was horrible. She wanted to go her home back. She wanted to go to her mom. वो वहाँ नहीं रुकना चाहती, वो वापस जाना चाहती. She just want to get out of that place. Anyhow, it was short of punishment for her to stay there. And by the thanks of God, Rabbu appears back. जी हाँ, Rabbu यहाँ वापस आती है. She came back, and then again, the incident of that cat licking and that short of other terms were going on. And what the other things, really, what the other things that I really need to mention? जी हाँ, रात को सोते उसको ऐसा लगता है कि साथ वाली रजाई के अंदर ना एक एलिफेंट आ गया. This elephant in that quilt. क्या यार वो रजाई का साइज इतना कैसे हो जाता डेली? And finally one day, with lots of courage, the narrator switch on the light and just squeeze out quilt. जी हाँ, उस quilt को खींच देती है. And what she said? Oh God, that's the word. Oh God, what she have seen. What she has seen, that is a class of writing that the ishmat chughtai had used at the end of the story. Oh God, what she has seen that we have been thinking of. जी हाँ, जो हम सोचेंगे वही देखा उसने. And that definitely going to affect the innocence of the child. She was not having a really complete sleep after that incident. Whenever she just tried to have quilt over herself, she just moved on to this melodrama that what had happened at Begum Jan house. This is completely a masterpiece. जी हाँ, controversial है, हम इस सबको समझ सकते हैं why it is controversial और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी है. We need to go through by the basics. बेसिक्स को समझें. लिहाफ है क्या, राइटर ने क्या बताने की कोशिश किया. दिस इज शॉर्ट ऑफ इंसिडेंट दैट हैड टेकन प्लेस इन द लाइफ ऑफ अ नरेटर, एंड शी वर्कड जेन्युइनली, शी वर्कड वेरी वेल व्हाइल डिलीवरिंग द स्टोरी इन अ परफेक्ट मैनर. अब यहाँ पे आपने स्टोरी को डिलीवर किया, नरेटर ने कैसे डिफाइन किया चीज़ों को, एंड हाउ शी हैव यूज्ड each and every incident in a perfect manner that gives a complete space to the readers or the viewers so that they can analyze what is actually going on. जी हाँ, ये सब था लिहाफ में. आपने बोला शॉर्ट स्टोरी की डिस्क्रिप्शन थी, अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन शॉर्ट स्टोरी ऑफ लिहाफ दैट बी यूजफुल फॉर ऑल दोज लिटरेचर स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड.
because this play make ishmat chughtai the most popular writer among short story writers. जी हाँ, after this play he got his name acknowledged everywhere. तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हो तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट में जाना है एंड कैन सी ऑल दैट वीडियोस एंड यू कैन ईजिली एक्सेस ऑल दीज वीडियोस। अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस, बिकॉज यू गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ वीडियोस, दोज आर गोइंग